Okay, so students, welcome students. In today's lecture, we are taking the last topic of the group 16, and the name of the topic is H2SO4 sulfuric acid. It is sulfuric acid. Okay, formula is H2SO4. So this sulfuric acid is known as the king of the chemicals. The reason for it is, in any industry, at least for cleaning purpose, H2SO4 is used, and any country is how much capable on the basis of the chemicals, then it is based on the use and the production of H2SO4. Means any country is how much capable and how much क्या बोलते हैं, मतलब वो कितना कैपेबल है केमिकल्स के बेस पे, तो वो डिपेंड करता है H2SO4 कितना यूज़ होता है और H2SO4 कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है. क्योंकि अगर वो एज अ रिएजेंट यूज़ नहीं होता तो फाइनली क्लीनिंग पर्पस के लिए तो वो यूज़ हो ही रहा है. ओके, सो नाउ दिस H2SO4 कैन बी produced industrially by contact process. Another process is lead chamber process. Okay, and in this process NO is used as a catalyst, and here V2O5 used as a catalyst. Okay, chalo. It contains total 3 steps. First step, sulfur or sulfide minerals, sulfide ores are heated and we are getting the SO2. Okay, then SO2 is converted into SO3 by oxidation, but this reaction is so much slow, and to faster the reaction V2O5 catalyst is used. Similarly, third one, SO3, actually it should be reacted with H2O to give the H2SO4, but its solubility is less. That's why this SO3 is dissolved in H2SO4, then we are getting H2S2O7. It is known as oleum. Okay, and then on the basis of requirement, water is added carefully, because addition of water, dissolution of H2S2O7 is an exothermic process. Okay, so that carefully water is added. Okay, now in a textbook you are given one flow diagram, and it is not in our syllabus. Okay, though we are taking and we are here learning this. Now consider this flow chart. So in this flow chart, first of all, sulfur or sulfide mineral is taken. Sulfur or sulfide mineral is taken here, and then air is passed through it. Okay, so impure SO2 and O2 is obtained. This is the dust precipitator, मतलब जितनी भी dust होगी वो इसमें से precipitate हो जाएगी. So here we are getting the pure SO2 and O2. Then spray of water is taken here. Okay, so it will washing in the cooling tower, and here waste water is taken outside, and then here concentrated H2SO4 is sprayed, so that waste acid is here. And so यहाँ पे ये जो वॉशिंग था तो उसको मतलब उस जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर इसमें से रिमूव होना चाहिए. सो यहाँ पे वो, क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर से स्प्रे किया था ना उसको प्योरीफाई करने के लिए. ओके, तो उसके बाद यहाँ पे वेस्ट एसिड नीचे मिलेगा, और जो ड्राइंग टावर है इसका नाम है, उसमें से आपको ड्राई SO2 and O2 मिलेगा, एंड देन इट इज़ पास्ड
arsenic purifier containing the gelatinous hydrated FeOH thrice, ferric oxide. Hydrated ferric oxide is a FeOH thrice. Okay, it is preheater and then it is passed through the V2O5. This is the catalytic converter, and due to presence of the catalyst, SO2 and O2 are reacted together to give the SO3, and this SO3 again यहाँ पे देखो क्वार्ट्ज लिखा है और फिर कंसनट्रेटेड H2SO ऊपर से स्प्रे करते हैं, मीन्स तब पूरा का पूरा SO3 H2S2O7 ऑलियम में कन्वर्ट हो जाएगा. अगेन फिर से समझा दूँ, यहाँ पे डिफरेंट आपको टावर दिए हैं. फर्स्ट टावर is known as sulfur burner, so that sulfur is converted into SO2. Okay, and here SO2 and O2 are impure. Then water is sprayed. This one is the washing and the cooling tower. Okay, इसमें से फिर आपको क्या मिलेगा, मॉइस्चर वाला SO2 और O2 मिलेगा. देन कंसंट्रेटेड H2SO का स्प्रे किया गया, जिससे आपको क्या मिलेगा, ड्राई SO2 एंड O2. सो दिस टावर इज नोन एज ड्राइंग टावर. एंड देन दिस SO2 एंड O2 फिर उसमें से क्या, आर्सेनिक प्योरीफायर, और भी उसको प्योरीफाई किया. अगर कोई भी इम्प्योरिटी रह जाती है तो फिर ये प्री हीटर है, मतलब पहले से हीटेड ही है. और फिर हाई टेम्परेचर पे SO2 और O2 दोनों V2O5 की प्रेजेंस में क्या देंगे, SO3. एंड देन फाइनली दिस SO3 इज एब्जॉर्ब्ड इन H2SO4 लाइक दिस in presence of quartz का formula पता है ना, SiO2. and then finally we are getting the oleum, name is H2S2O7. again H2S2O7. so this is the flow chart and flow diagram of the manufacturing of the H2SO4. okay, so by this way H2SO4 is industrially produced. चलो तो इतना तो क्लियर हुआ होगा. अब देखो, चलो V2O5 यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है. अब और एक टेक्स्ट बुक में से एक पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करना है. सो इन अ टेक्स्ट बुक यू आर गिवन दैट हाउ SO3 इज यूज्ड अप. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ SO3 इज यूज्ड अप एंड व्हाट इज द की. ओके, चलो तो फिर इतना आप ही हम ले लेते हैं यहाँ पे. Okay, next. The key step in the manufacture of H2SO4 is the catalytic oxidation of SO2 with O2 to give the SO3, and here V2O5 is used as a catalyst. Okay, this reaction is an exothermic, and here number of gaseous molecules are at reactant are 3 and product are 2. Again, number of gaseous molecules at reactant, it is 3. Okay, and at product side it is 2. So if we apply more pressure at that time, the equilibrium will be established towards right hand side. Okay, first of all, this reaction is exothermic, it is reversible, exothermic, reversible, and the forward direction leads to a decrease in volume. Therefore, low temperature and high pressure are the favorable condition for the maximum yield. But if we keep the low temperature at that time, rate of reaction becomes slow. The reason is at low temperature, the kinetic energy of the gaseous components becomes slow. That's why speed of the reaction becomes slow. Again, here, this temperature, if we consider low temperature, so at low temperature,
reaction will not be occurred at a normal rate. The reason for it is the all the gaseous components have low speed, low kinetic energy at low temperature. Okay, that's why an optimum state is prepared, that is the 2 bar pressure and 720 Kelvin temperature. In this condition, and the catalyst is V2O5. Okay, so under this condition we are getting the maximum amount of this 2SO3. Okay, and this is known as optimum state. And the obtained SO3 gas is absorbed in H2SO4 to produce the oleum. And the dilution of oleum with water gives the H2SO4 of the desired concentration. फिर जो भी आपको concentration चाहिए उस हिसाब से कर दो. In the industry, 2 steps are carried out the simultaneously to make the process continuous one, and also to reduce cost. That is SO3, H2SO4, then H2S2O7. The sulfuric acid obtained by contact process is 96 to 98% pure. Okay, easy. Next is the properties. Then the properties of H2SO4. First, in a textbook you are given physical properties, and then after chemical properties. Okay, so next is the properties of H2SO4. So this para is of physical properties, and then after chemical properties. So here it is physical properties, and then after from here it is chemical properties. These are the chemical properties. Now see, H2SO4 is a colorless, dense, oily liquid with the specific gravity. It is 1.84. The acid freezes at 283 Kelvin and boils at the 611 Kelvin. It dissolves in water with the evolution of the large quantity of heat. Hence, care must be taken while preparing the sulfuric acid solution from the concentrated H2SO4 or oleum. The concentrated acid must be added slowly into the water. जिससे क्या हो गया कि यहाँ पे जो भी वाटर ऐड होना चाहिए वो भी एकदम स्लोली, ओके, और विथ कंटिन्यूअस कांस्टेंट स्टरिंग. जिससे क्या होगा, और उसके वो भी एक चीज़ है कि यहाँ पे जिस बिकर में आप मिक्सचर कर रहे हैं उस बिकर में के अराउंड आपको आइस बाथ भी रखना होता है, या तो फिर आइस क्यूब भी रखना होता है. ओके, बड़ा बिकर लेके फिर साइड में हम ऐसा करेंगे, because so much heat is generated during the dilution. Okay, next. So this one is the physical, these are our physical properties. Next is the chemical properties. Now remember, there are 4 characteristics of the H2SO4. Low volatility. So this H2SO4 is known as oil of vitriol. Again, H2SO4 का दूसरा नाम है oil of vitriol. Okay, next is it has a strong acidic characteristic, so it is used to make the other acids, mineral acids. Strong affinity for water, that's why H2SO4 is used as a dehydrating agent, and the ability to act as an oxidizing agent. अब देखो एक रियल फैक्ट ध्यान रखना, मैं जो समझा रहा हूं वो. नाउ टेल मी द ऑक्साइड ऑफ oxo acid of nitrogen having highest oxidation state, it is HNO3. See, HNO3.
Here nitrogen contains maximum oxidation state +5, H2SO4 +6, HClO4. So these are the oxo acids. If we take KMnO4, Mn has oxidation number +7, K2Cr2O7, oxidation number is +6. So remember one fact, that if any compound has an element having highest oxidation state, means they have tendency to accept the electrons. So HNO3, उसमें नाइट्रोजन, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे Mn, यहाँ पे Cr, तो ये सब एलिमेंट्स उनकी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, सो दैट दीज कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब खुद का रिडक्शन होगा. अगेन खुद का रिडक्शन होगा और वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे. सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. सिंपल. Okay, over. So again HNO3 +5 highest oxidation state. H2SO4 में सल्फर की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 3s2 3p4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे 2s2 2p3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे 3s2 3p5 हाईएस्ट. यहाँ पे 3d5 4s2. यहाँ पे 3d5 4s1. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हुई ना, तो उनकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की. दैट्स वाई, मतलब उसके जो भी कांटेक्ट में होंगे उनका ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाएंगे. ओके, सो रिमेंबर दिस फंडामेंटल. ओके, एंड एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस देन स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस. मतलब +5 +6 +7, तो हाईएस्ट वाला कौन सा होगा? +7 वाला. ओके, और भी एक फैक्ट, HNO2 एंड HNO3, तो दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? चेक द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम. हियर इट इज +3 एंड +5. सो विच विल बी? +5. क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की तो पूरी एक सीरीज है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. एंड हियर सेम वे, एज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, then strength of oxidizing agent increases. ओके, तो यहां पे टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, तो हमने पूरा का पूरा फंडामेंटल साथ में ले लिया. नाउ इन एक्वियस सोल्यूशन H2SO4 ionizes in 2 steps. That's why we are getting 2 types of salts. First is bisulfate ion. We know that the name of it is bisulfate ion, and this one is sulfate ion. So H2SO4 produces 2H plus stepwise. That's why we are getting bisulfate and sulfate ions. Easy. See, for first reaction, the Ka1 is very large as compared to the Ka2. Ka2 is 0 point something, where Ka1 is more than 10. So that H2SO4 is the strongest acid. Okay, acid forms 2 series of salts. अभी मैंने बताया वो normal salts, that is sodium sulfate etc, copper sulfate, and the acid sulfates means hydrogen sulfate, bisulfate मैंने बताया ना अभी वही. तो अगेन इसका चार्ज होगा HSO4 1 माइनस, और नॉर्मल सल्फेट उसका चार्ज होगा SO4 2 माइनस. सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ लो वॉलेटिलिटी, so it can be used to manufacture the more volatile acids from their corresponding salts. For example, किसकी बात हो रही है? चलो देखते हैं हम. तो यहाँ पे बात हो रही है MX, उसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करें हम. Again we are taking MX plus H2SO4. Then we are getting MHSO4 and HX. यहाँ पे NaCl ले लो, then we are getting HCl.
if we take NaNO3 in group 15 it is done, then we are getting HNO3. ओके ये वाली रिएक्शन हो गई है. ओके सिंपल, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं. चलो ये okay. Now MX H2SO4, then we are getting HX, where X equals F, Cl, NO3, etc. Okay, M for metal, sodium, potassium, etc. Concentrated sulfuric acid is the strong dehydrating agent. So many wet gases can be dehydrated by simply passing through the H2SO4 solution. तो देख लो यहाँ पे मैं एक simple one test tube is taken and it's a rubber cap. One small tube is passed till bottom of the test tube and one small tube is passed like this. Here H2SO4 is taken, concentrated H2SO4 is taken, and if we pass wet gas, okay, and it is bubbled from the H2SO4, then here we are getting the dry gas, because H2SO4 has tendency to absorb the water molecules, so it is used as a dehydrating agent. Okay, and here we are getting dry gas, but some rules are followed. First, rule number 1, that gas cannot be reacted with H2SO4. दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर रिएक्शन हो गई तो फिर हमें यहाँ पे नई प्रोडक्ट मिल जाएगी. सो हमारा जो एम है वो यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा. ओके, मीन्स हमारा जो यहाँ पे जो वेट गैस है वो तो यहाँ पे नया कंपाउंड बना देता है. तो हमारा एम क्या है? टू गेट द ड्राई गैस, टू एब्सॉर्ब, टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. Okay, so wet gases can be dried by passing them through the H2SO4, and provided the gas do not react with the acid. Okay, and the sulfuric acid removes water from the organic substances. तो याद रखो ये C12H22O11. This formula is of sugar. So when sugar reacts with H2SO4, then water is removed and we are getting the carbon. Hot concentrated H2SO4 is a moderately strong oxidizing agent. So in this respect, it is intermediate between the phosphoric acid and the nitric acids. Okay, देख लो कॉपर तो उसमें से CuSO4 बनाएगा और SO2 मिलेगा. अगर सल्फर लिया है तो फिर उसमें से SO2 मिलेगा, और कार्बन लिया है तो इसमें से CO2 मिलेगा. देखो सब में SO2 तो है ही. ओके, चलो. सो नाउ H2SO4 उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट होती है. एंड लास्ट पैरा इज द यूजेस. सी द यूजेस. H2SO4 is a very important industrial chemical. A nation's industrial strength can be judged by the quantity of H2SO4 it produces or it consumes. It is needed for the manufacture of hundreds of the other compounds. Also in many industrial processes. The bulk of the H2SO4 produced is used in the manufacture of
fertilizers. First is ammonium sulfate, superphosphates. Other uses are petroleum refining, then pigments, paints, dye stuff intermediates, then detergent industry, then metallurgical applications like cleansing of the metals before enameling, electroplating, galvanizing, strong batteries. Yeah, then a storage batteries, late storage cell, chapter 3, and the manufacture of the nitrocellulose products and as a laboratory reagent. Okay, so by this way it is used. Okay, so finally our group 16 is now completed. Okay, then today's lecture is over now.